What a classic book, Feel the Fear and Do It Anyway by Susan Jeffers. इस book summary को हम समझेंगे. This book summary video is not to read the book, but it's just a context. You should be reading the book by watching this particular book summary. We'll understand what are the 3 different levels of fear in this particular video. We'll also understand what are the 5 truths of fear. 5 ऐसी सच्चाई of fear, which fear is a very very powerful emotion which we have got. And we'll also look at कि आपकी vocabulary को आप कैसे change कर सकते हो to really start to feel the power, to feel the faith in yourself, और ये डर को हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकते हैं using these powerful principles in this classic Feel the Fear but Do It Anyway by Susan Jeffers. Let's do this together. So, Napoleon Hill ने पूरा एक चैप्टर डिवोट किया इन थिंक एंड ग्रो रिच, विच इज द फिनाले, विच इज द 6 घोस्ट ऑफ फियर. ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 इन थिंक एंड ग्रो रिच. 6 घोस्ट ऑफ फियर बोलते हैं नेपोलियन हिल, यानी ये घोस्ट है, यानी भूत है, ये सच्चाई नहीं है. फियर एक्चुअली इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल. आई मीन दिस इज अ वेरी फेमस एक्रोनिम. इट्स फॉल्स एविडेंस है ही नहीं, तो ये हमारे काल्पनिक, हमारे इमेजिनेशन की कुछ चीजें हैं. दैट इज द फियर विच वी वांट टू एलिमिनेट. नो रियल फियर, लाइक फियर ऑफ मे बी, आप ऐसा मत बोला कि मैं एकदम फियरलेस हो गया हूं, आई एम गोइंग टू गो ऑन द रोड एंड रियली डू व्हाटएवर इज देयर. सिद्धार्थ शाह ने बोल दिया देयर इज नथिंग लाइक अ फियर, सो फॉल्स है. नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. आई एम गोइंग टू जंप द क्लिफ. ऐसा कुछ मत करिए प्लीज. दिस फियर इज समथिंग विच वी हैव क्रिएटेड इन आवर इमेजिनेशन एंड दैट इज द फियर विच स्टॉप्स अस फ्रॉम टेकिंग एक्शंस. अंडरस्टैंड दिस. डर को कैसे निकालना है, एंड दैट्स द रियल रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज जैसे बोलते हैं डर के आगे जीते हैं. सो व्हाट इज फियर? फियर इज एन इमोशन. अंडरस्टैंड दिस. ये इमोशन बहुत जबरदस्त पावरफुल इमोशन है. इस इमोशन को अगर आपने कंट्रोल कर दिया, इट्स अ वेरी पावरफुल इमोशन. इट कैन चैनलाइज दिस एनर्जी एंड यू कैन स्टार्ट टू टेक मैसिव एक्शंस. जो भी एक्शंस आप नहीं ले रहे हो वो आप एक्शन ले सकते हैं यूजिंग दिस पावरफुल इमोशन ऑफ फियर, इफ यू रियली अंडरस्टैंड हाउ टू कॉन्कर दिस पर्टिकुलर फियर. यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है. एक है ब्रेवरी, यानी एक ब्रेवरी एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, और दूसरी है करेज. See, bravery means you're not thinking of any fear और आप पागलपंती करके कुछ भी करेंगे. I mean, बस मुझे कुछ डर नहीं है. That is not the context which we're talking about. We're talking about courage. That means courage is not the absence of fear, but courage is taking action despite the fear. That means आपको पता है कि यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, आप डर महसूस कर रहे हो, but still you're taking actions, and that's where courage is much more better than bravery. You take massive actions, you are aware of the fear, you minimize the risk, and that's where your chances of success become to the next level. तो ये बहुत important distinction है. तो let's understand कि what are the 6 basic fears which Napoleon Hill talks about. Then we're going to talk about Susan Jeffers, how she talks about the 3 different levels of fear. Move on. So let's look at what are the 6 basic fears. The first fear is the fear of losing money. पैसा खोने का डर बहुत कॉमन फियर है, सबके पास वो डर रहता है. सेकेंड फियर इज द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे भाई लोगों का तो काम है कहना. सो दैट्स द सेकंड बेसिक फियर व्हिच एवरीबॉडी फेसेस. द थर्ड बेसिक फियर इज द फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमार होने का डर. आई मीन मुझे बीमारी होनी नहीं चाहिए, एंड पीपल हैव दिस पर्टिकुलर फियर. द फोर्थ फियर इज द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ नियर एंड डियर वंस. द फिफ्थ फियर इज द फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापा. एंड द सिक्स्थ फियर इज द फियर ऑफ डेथ. मुझे मरना नहीं है. That are the 6 basic fears. And of course, if you go further in detail and study the principles of success, the law of success, तो वहाँ पे we talk about 24 different other fears. तो 6 fears ये basic fears है, और उसके secondary fears है which are 24 other fears. ये 30 fears are talked about in Think and Grow Rich. But Susan Jeffers gives this entire context in a different perspective. She talks about 3 different levels of particular fears. So let's look at what is the first level of fear which Susan Jeffers talks in her classic book. Level 1 fear is all situation oriented. For example, aging, बुढ़ापा आ गया, you becoming disabled, maybe retirement अभी हो गया, अब क्या करेंगे, being alone, natural disasters, loss of security, change, war, illness, making decisions, change of career, ending relationships, beginning new relationships, having a child, being interviewed, driving, public speaking, and accidents. So level 1 fear is not something which is inside of us, it's all situation oriented. और situations तो change होने वाली है ना. I mean, ऐसा तो है नहीं कि situation will never change, because the only thing which is constant is change. Change is the only thing which is constant. I mean, हमेशा everything is going to be impermanent. We got to be living in this constant state of change. तो अगर बाहर की situation जो हमारे कंट्रोल में है नहीं, और वो situation से हमें डर लगेगा, तो फिर पूरी जिंदगी में हम डर में रहेंगे. So this is the level 1 fear which is all situation oriented. That's the first one. Level 2 fear which involves the ego. For example, rejection, success, failure, being vulnerable, being fooled, helplessness, disapproval, loss of image.
तो ये सारे लेवल 2 है विच इज मोर कनेक्टेड टू विद इन आवरसेल्व्स। यानी हमारा जब ईगो आता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया यार, मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, और विच वेदर आई शील से नो तो क्या होगा, मे बी आई विल लूज सम मनी, सो ऑल दैट इज कनेक्टेड टू द इनसाइड ऑफ अस विच इज कनेक्टेड टू योर ईगो। दिस इज level 2 fear. Level 3 fear is simple. I can't handle this. I can't handle it. That's level 3 fear. कि भाई मेरे से नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है. You just admit the fact these are the 3 different levels of fear. Level 1, level 2 and level 3. Susan Jeffers in her book talks about 5 different truths about fear. सी जो भी चीज़ को हमें हटाना है उस चीज़ के बारे में अगर अंडरस्टैंडिंग हम बढ़ा देंगे, सच्चाई समझेंगे, तो चांसेस आर बेटर वील बी एबल टू रिमूव दिस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ इमोशन ऑफ फियर। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द डिफरेंट 5 ट्रूथ्स ऑफ फियर, और आप अपने लाइफ से इसको कनेक्ट करिए, आपके इमोशन ऑफ फियर से कनेक्ट करिए कि हाँ यार ऐसी मेरी लाइफ में हो रहा है और डेफिनेटली आई कैन कॉन्कर दिस पर्टिकुलर फियर विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट इज द फर्स्ट ट्रूथ? ट्रूथ 1, The fear will never go away as long as I continue to grow. तो ये रहा पहला truth. Understand this. As long as you are continuing to grow, fear रहेगा, 100% fear रहेगा। You look at your past, जहाँ से भी बचपन से आप अपनी जर्नी याद करिए कि मैं किंडरगार्टन में था, फिर नए स्कूल में गया, थोड़ा डर लगा, रो रहा था, फिर नए कॉलेज में गया, वापस मुझे डर लगा कि रैगिंग होगी, ये होगा, बट आई ग्रू इन कॉलेज ऑल्सो, आई ग्रू एज अ पर्सन। फिर मैं भी कॉलेज से लगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आई वेंट टू अ कॉलेज, तभी वापस डर लगा कि कैसे क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, कुछ मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अगेन यू हैड द फियर बट यू ग्रू एज अ पर्सन। देन पहली नौकरी लगी, बॉस कैसा होगा, जॉब कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट अगेन यू गॉट दैट फियर, यू टुक दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी एंड यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। तो वहाँ पे भी डर लगा आपको, बट you moved forward. So if you look at every area, let's say in personal life that I was into a relationship, I was fearful कि यार ये emotional अत्याचार नहीं हो जाएगा. Then maybe you are in getting married or maybe having a new role, becoming a father. So maybe a new product in your business, new service, new boss, maybe a new city, maybe कोई नया employee आ गया, नया teammate आ गया. जब भी आपने life में growth किया है, तभी आपको fear आपने definitely experience किया होगा. Understand this. As you grow, you have to experience the fear. Fear and growth go hand in hand. ये सच्चाई है about fear. और जितनी आप सच्चाई को समझेंगे, मैं fear को नहीं निकाल पाऊंगा. As long as I want to grow, मुझे grow तो करना है, मुझे fear को experience करना पड़ेगा. That's the first truth. The second truth. Truth 2 is the only way to get rid of the fear of doing something is to go out and do it. कितनी सच्चाई है. अगर पब्लिक स्पीकिंग का डर है, एक बार जाके बोल दो यार, जो होना है होगा. मे बी अगर लेट्स से प्लेन में जाने का डर है, एक बार बैठ के जाते, जो होना है हो जाएगा. मे बी लेट्स से एलिवेटर में बैठने का डर है, एक बार जाते एलिवेटर में देखा हो गया. हॉरर पिक्चर देखने का डर, देखते क्या होता है. सो द ओनली वे टू रिमूव द पर्टिकुलर फियर इज टू डू इट. एज नाइकी सेज, जस्ट डू इट, बिकॉज वंस यू डू इट, दैट्स द बेस्ट वे टू कॉन्कर फियर. इन फैक्ट इन द चैप्टर ऑफ परसिस्टेंस ऑफ थिंक एंड ग्रो, जो हम 30 बार हमने पढ़ी है, सुनी है, इसका पूरा वीडियो भी यहाँ पे हमारे यूट्यूब पे है, जो 30 टाइम्स इफ यू लिसन टू परसिस्टेंस चैप्टर, you will definitely get the spirit of never giving up. In that chapter, Napoleon Hill mentions that this is proven that the only way you can conquer the particular fear is by doing this. So ये सच्चाई है. जब तक आपने कोई चीज़ नहीं की, तब तक वो डर नहीं जाएगा. लेकिन एक बार आप करेंगे, let's say you want to talk on YouTube वीडियो बनाना है, you can start by doing it. Start because start is the biggest stop. जब start करते हो तो fear automatically निकल जाता है. देखिए, याद करिए आपकी पुरानी हिस्ट्री में, maybe in your past memories, कि ऐसी कौन सी चीज़ों से आपको डर लग रहा था कि यार कैसे होगा, नहीं कर पाऊंगा, बहुत डर लग रहा है. बट जब भी आपने शुरुआत की, एक बार, 2 बार, 3 बार करते गए, अभी कहाँ है वो डर है ही नहीं. तो दैट्स हाउ यू कॉन्कर द फियर. स्टार्ट डूइंग इट एंड दैट्स वेयर द फियर गोज अवे. दैट्स द सेकंड ट्रूथ. थर्ड ट्रूथ, द ओनली वे टू फील बेटर अबाउट माई सेल्फ इज टू गो आउट एंड डू इट. जबरदस्त चीज है. एक चीज़ है कि जहाँ पे हम डर में बैठे हैं कि नहीं करना है यार, नहीं होगा यार, हमारे से नहीं होगा, बहुत डर लग रहा है. तो एक तो यू फील सो बैड अबाउट योर सेल्फ कि यार ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ. यू फील सो बैड अबाउट योर सेल्फ, यू नॉट गोइंग टू फील बेटर. बट जब भी द ओनली वे टू फील बेटर नाउ इसके यार वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ. बिकॉज एवरी पर्सन इज द सेम, एवरी पर्सन, वी आर ऑल सेम. इफ वन पर्सन कैन डू सो, आवर स्पिरिचुअल डीएनए इज परफेक्ट, आवर रिजल्ट्स आर डिफरेंट, बट एवरी ह्यूमन बीइंग पोटेंशियल, हमारे, वी आर गॉड्स हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन. तो वी हैव गॉट द सेम पावर, द सेम पोटेंशियल. अगर एक ये इंसान कर सकता है, आई कैन ऑल्सो डू सो. एंड दैट्स वे यू स्टार्ट टू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ. So if you want to feel better about yourself, that's the only way to conquer the fear.
काम करिए, आगे बढ़िए, you conquer the particular fear. That's the third truth. The fourth truth. Not only I am going to experience fear whenever I am on unfamiliar territory, but so is everyone else. हाँ, ये मजा आएगा. ऐसा नहीं कि मुझे ही डर लग रहा है, दूसरों को भी डर लग रहा है, शायद से वो दिखा नहीं रहे हैं. तो अगर जब आपने ये सच्चाई समझी यार, उसको भी कुछ ना कुछ तो पब्लिक स्पीकिंग में कुछ तो वो नर्वस होगा यार, 100% होगा. तो यार वो भी है तो मैं भी हो सकता हूँ. और जब भी आप ऐसा सोचते हो ना, आप में ऑटोमेटिकली वो एक करेज आता है टू रिमूव दिस पर्टिकुलर फियर. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी यार उसमें कोई डर नहीं है. नहीं, every person faces the particular fear. For example, I mean, when I started my journey of YouTube and I started my journey of talking in front of public, maybe a public speaking बोलो, seminars, webinars, selling on webinars, seminars, डर तो लगता था. But practice and now it's becoming second skin. अगर उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ. आप भी वैसे सोच सकते हो, अगर ये कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ. And that's how you conquer this particular fear. That's the fourth truth. And the fifth truth is, pushing through fear is less frightening than living with the underlying fear that comes from a feeling of helplessness. क्या सच्चाई है ये ट्रूथ में यार, कि यार एक बार मैं वो फियर को तोड़ूंगा तो दैट इज लेस फ्राइटनिंग, उसमें मुझे कम डर लगेगा. ताकि मैं जो अभी मैं महसूस कर रहा हूं कि एज अ हेल्पलेसनेस, कि मैं मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँ, वो जो डर रहेगा कि आई विल नेवर बिकम फाइनेंशियली फ्री, आई विल नेवर टेक मैसिव कंसिस्टेंट एक्शंस, आई विल नेवर बी एबल टू टेक दोस बिग क्लाइंट कॉल्स. तो क्या होगा उस डर में, आई मीन मेरे सारे रिजल्ट्स में अचीव नहीं कर पाऊंगा. दैट इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्गर फियर कंपेयर टू द फियर विच आई एम गोइंग टू हैव इफ आई टेक दैट गोल, टेक दैट एक्शन एंड मूव टुवर्ड्स माई गोल्स. तो ये दोनों फियर को कंपेयर करेंगे कि आई एम फीलिंग हेल्पलेस ओवर हियर, और ये बहुत खतरनाक फियर है मेरे लिए यार. उससे बेटर ये कि लेट मी जस्ट कॉन्कर दिस पर्टिकुलर फियर एंड मूव फॉरवर्ड एंड गेट द रिजल्ट्स. ये फिफ्थ पर्टिकुलर ट्रूथ है. इफ यू गॉट दिस 5 पावरफुल ट्रूथ्स, अंडरस्टैंड दिस, जितनी सच्चाई को समझेंगे उतने बेटर आपके रिजल्ट्स आएंगे. Now I'll show you a very powerful technique how to remove this particular fear. In fact, in Think and Grow Rich, the technique which is called is the third step to riches, which is auto-suggestion. What is auto-suggestion? Auto-suggestion is self-suggestion. आप अपने आप को एक suggestion दे रहे हो, and that's how you can really start to conquer this particular fear. In fact, Brian Tracy का एक जबरदस्त powerful affirmation है, which is a classic to remove the particular fear. Is you can write this down. I believe I can. I believe I can. 4 word affirmation जो आप बार बार रिपीट कर सकते हो. You can hammer it in your conscious subconscious mind. I believe I can. I believe I can. I believe I can. I believe I can. You can do this right now. I believe I can. I believe I can. That's where you can really start to remove this particular fear. तो जब भी डर लग रहा है, आप अपने आप को यही affirmation बार बोल सकते हो. You can record this in your own voice on your mobile, the voice which you trust, and listen to it again and again. जब भी आपको डर महसूस हो रहा है, maybe you want to go and talk to your client, maybe you want to take this big meeting, maybe आपको किसी के सामने presentation करना है, etc. And you feel this particular fear, at that time you really feel and tell yourself, I believe I can, I believe I can, I believe I can. And in this book, Feel the Fear and Do It Anyways, Susan Jeffers ने बहुत सारी अच्छी switch vocabularies दी है कि एक fear की vocabulary क्या होती है और एक faith की vocabulary क्या होती है. I'm just going to say out all these things so that you can really start to see कि ये मुझे मेरी भाषा change करनी पड़ेगी. और जैसे भाषा change की, words create our world. Definitely the words change, the world is going to change for us. So let's understand what is the power vocabulary which you can have to really conquer this particular fear. Don't say I can't, say I won't. Don't say I should, say I could. Don't say it's not my fault, say I'm totally responsible. Don't say it's a problem, say it's an opportunity. Don't say I'm never satisfied, but say I want to learn and grow. Don't say life's a struggle, but say life's an adventure. Don't say I hope, but say I know. Don't say if only, but say next time. Don't say what will I do, but say I know I can handle it. Don't say it's terrible, but say it's a learning experience. ध्यान से देखिए आपके कौन से वर्ड्स आप यूज कर रहे हो बार बार, एंड ट्राई टू स्विच इट विद दिस न्यू पावरफुल वर्ड्स, एंड दैट्स वेयर यू कैन रियली स्टार्ट टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी एंड रियली स्टार्ट टू क्रिएट एंड चेंज योर कॉन्शियस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग. और तभी आप फियर को कॉन्कर कर पाएंगे. ये 6 बेसिक फियर्स समझे हमने. We understood the 3 different levels of truth also, and the 3 levels of fear, the 5 truths also we understood this.
बहुत सारी चीज़ें हमने फियर की बात की है, मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं हाउ टू कॉन्कर दिस डिफरेंट फियर्स. इनफैक्ट एवरी फियर का एक सिम्टम होता है, एक कॉज रहता है विच वी डिस्कस दिस इन आवर थिंक एंड ग्रो रिच अकेडमी ऑल्सो. इफ यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो और अगर कसम खाते हो कि आई विल नॉट लेट फियर स्टॉप मी, then please like this particular video, share this particular video, subscribe to our channel, show some love and respect. Let's get ready to think and grow rich.